you might be knowing his name. That's John Dewey. He discussed a lot about this education and democracy. And by democracy, he meant uh, that there are different forms, different dimensions in this regard. He says that no experience is educative that does not tend to knowledge of more facts and entertaining of more ideas and to a better, more orderly arrangement of them. And that is that one has to be connected with others in order to be updated, in order to progress, in order to have a good collaboration. And you already know that collaboration is something which is uh, related to education very intimately. Uh, Collaboration is something which is required uh, uh, always in education. Education is not by competition, but just by collaboration. Um, so I was talking about John Dewey. There's a long discussion regarding interaction between different faculty members and between faculty members and staff members in an educational institution and so on. Today, uh, as you know that there are so many dimensions, we will only take up two dimensions which are absolutely necessary to understand and to acquire. And these skills include assertiveness communication and emotional intelligence. So we will take up only these two aspects of and so on interpersonal today, skills. As you know that there are so many dimensions, we will only take up two dimensions which are absolutely necessary to presentation, understand and to acquire. And these skills include assertiveness communication and emotional intelligence. So we may be having some power interruption in between because there's some power issue at my end, but that will be resolved in 2-3 minutes after presentation. You face it. And these skills include okay assertiveness communication and emotional intelligence. So we may be having some power interruption in between because there's some power issue at my end, but that will be resolved in 2-3 minutes after. Just give me 2-3 minutes. And these skills in this time, okay. I would request Dr. Sadia to uh, give her views about interpersonal skills, what she thinks about it, and so that I can fix the things at my end. But that will be resolved in 2-3 minutes. Sir, I think that Just give me two, if three we minutes. have some In positiveness this in our time, mind about okay. everyone, if we think positive about I would everyone, request Dr. then there Sadia will be least conflicts to among the faculty members, among uh, the staff, and among give each other her we views meet. about interpersonal skills, what she thinks about it. So you can collect ideas about interpersonal skills, what they think about it, and Sir, uh, I think that so on. I mean, if we their have views. some In positiveness this in our time, mind about okay. everyone, Uh, we would like from the I would participant if request Dr. they want Sadia to give some suggestion about to the interpersonal relationship. give Among each other, her views there are about so interpersonal many skills.
Okay. respected participants, So I you would can like collect ideas to about interpersonal skills, what they give think some about it, and views from Mr. Aslan's team, who is so our on. I mean, respected statistician their at views. Medical Education Department. In this time, Sir, uh, we would like from the I would participant if request Dr. they want Sadia to give some suggestion to about I think that share if some we information start with complaining there are about others so and many we start okay. think positive about others, then So the you can conflict will be collect solved ideas about interpersonal automatically. skills, what they Give think some about it. What about views from conflict Mr. Aslan's management? Do you team, think that who is is an our important part of respected interpersonal statistician at skills? Medical Education Department. This is definitely an important part of interpersonal relationship. Conflict management. If you try to manage, or if you have a skill to manage the conflict, then definitely the environment will be smooth and the working will be smooth, and everyone can put a great potential of his or her into the academic activities and Right. the other things. So please gather views about the participants from the participants. What do they think that which are the skills required? I mean, a part of which can be entailed in the as a part of interpersonal skills. So there are many respected colleagues and faculty members. I would like to ask from them their opinions. I would like to ask from Dr. Akila Rafiq. Dr. I Akila, think can she you is a hear me? good candidate for commenting on this topic. Yes, definitely, sir. Dr. Yes, Akila, madam. can What you did please? you ask? Sorry. Yes. What did you ask? I didn't notice. What are your views about interpersonal skills? Right now, I have no comments. I would love to listen. I would love to listen and learn. Okay. Sir, Uh, I'm Dr. Madiha Afzal. Sir, I want to answer. Yes, Ji. definitely, you are welcome. Uh, Sir, I think the communication between the faculty members it related to interpersonal relationship, communication skills, communication between the faculty members. Does it come under interpersonal relationships? Communication between. Faculty Faculty members, sir. members. Yes, very much. That's very much there because you have to collaborate with all the faculty members. For instance, if you're sitting in the curriculum committee, then it is between clinical and basic sciences. If you're in the same department, it's about the duties and the duty roster and about the teaching of the students and your preference about the teaching methods, and then your interaction with your HOD and with the principal. So all these interactions, these are part of the interpersonal skills. Okay, thank you, So sir. very much, you're very much right. Sir, I think when there will be communication between the departments, then there will be least compartmentalization that has created a lot of problem in medical education and in the learning, teaching and learning of the students and the outcome we just want to have. Can you see the presentation now? Yes. Okay, so we move on, but in on the way we'll have power interruption because I've asked for a power lead and it is still on the way. So you might face some power interruption. Then I'll resume afterwards. Your work group is composed of 2 women. That's a scenario, and 5 men. The 2 women have brought up a problem to the group. They feel that the men are dominating the group process and, more importantly, the decision making. 3 of 5 men tell you privately that the women are taking advantage of being women to gain power, and one even confides in you. Uh,
जी डॉक्टर मुसरत ने ज्वाइन कर जी, लिया हमें। I'm back. I'm back. जी 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 सर, और वेलकम सर। let me just open up the presentation. Okay, you keep on talking. Sir, I was talking about the non-cognitive factors of person's personality. I think they are key factors that decide that how you communicate with others and what is your relationship with other people. Absolutely, absolutely. And that actually determines your success in the life, because we do not pay proper attention and we do not consider these skills very important. We straightway go to the core elements or core or science and neglect these important associated skills which are absolutely necessary for our success in every field of life. So, going back to the presentation, I was discussing about the scenario. If you have this kind of scenario, what will be your reaction? Can you see this? Yes. Okay. So I was talking about your work group. It is composed of 2 women and 5 men. The 2 women have brought up a problem to the group. They feel that the men are dominating uh, the group process and more importantly, the decision making. Maybe some of the ladies who have joined this meeting, they are thinking in the same way. 3 of the 5 men tell you privately that the women are taking advantage of being women to gain power, and one even confides in you that he considers the women witches. You know that the women are right and that they are following ethical group process by bringing up the issue to the group rather than running to the boss. You feel, however, that you might jeopardize your own reputation and future with the company by supporting them, especially since the corporation is dominated by men and one of the men in the group appears to be neutral as far as uh, Hello. 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 What would be your reaction? Can you ask the participants? Uh, I would like to ask from Dr. Tashfeen. She's quite from the time the session started. So I request Dr. Tashfeen to give your suggestion, your review about this scenario. Dr. Tashfeen, can you listen me? Dr. Madiha Afzal, can I request you to give your view? डॉक्टर सादिया एक्चुअली दरमियान में स्क्रीन जो है ना उसमें इंटरप्शन आ रही थी, मैं पूरा सिनेरियो पढ़ नहीं सकी और सर की आवाज भी चली गई थी, तो आखिर में आके ना मुझे ओके, समझ नहीं आई कि एंड में हुआ क्या। जी सर। ये देखिए कि जी एक्चुअली एक सिचुएशन है, वर्क ग्रुप है जिसमें 2 खातून ये कह रही हैं कि जी वो मेन दे आर डोमिनेटिंग और जो बाकी 5 आदमियों में से 3 आदमी जो है उस ग्रुप के वो कहते हैं कि जी विमेन जो है अपने विमेन होने का एडवांटेज ले रही हैं और वो एक तो कहता है कि ये तो है ही खराब, ये तो करती ऐसे हैं, और एक बंदा जो है वो न्यूट्रल है, वो कहता है कि जी ऐसा वाकई है। और अब आपकी सिचुएशन ये है कि आप समझते हैं कि द वुमेन इशू इज वेरी एथिकल एंड रैशनल,
लेकिन आपको ये खतरा है कि जी वो कहीं आपकी रेपुटेशन ना खराब हो जाए, क्योंकि ज्यादा मर्द हैं तो वो आपको एक सफेद कबाब बना देंगे. सो व्हाट वुड बी योर रिएक्शन? जी डॉक्टर मदीहा. Let me think. I think हाँ. नहीं सर, मुझे इसका जवाब देना मुझे नहीं आ रहा, लेकिन मेरा ख्याल है कि जो So it is a difficult फीमेल्स का जो situation. इशू है You वो, all understand हाँ, that इट्स अ this is not डिफिकल्ट. a very easy, जी, it's complex. So we need to know how to इट्स अ deal with कॉम्प्लेक्स these kind of सिचुएशन. situations. जी, एग्जैक्टली, So I would एग्जैक्टली, refer वी नीड to टू नो. Theodore Roosevelt. He was, American president, and he said the most important single ingredient in the formula of success is knowing how to get along with people. It is most important. And now we look at the literature. Interpersonal skills found to have 32% variance in peer ratings of performance. So they take 32% part of the whole, interactions. And interpersonal skills competence as important as general mental ability or task expertise. These two things are very important. You should be expert on your task, and then you should have good IQ. But it is as important as task expertise and mental ability. Excuse me. To have this competence. Dr. Sadia, can you read? Sir, relationship to effective performance across work domain varies with hot water So these are all 2001. references. जी sir. Why IPS are important to teach interpersonal relationship? 60% of the leaders said that they believe it is easier to cultivate such skills in students rather than in experienced employees. American Management Association What 2012. does this mean? What does this mean? सर दिस मीन ये हमारा जो है ये बेसिक कॉन्सेप्ट है इस्लाम में भी कि 7 साल तक जो है ना वो बच्चा वो सिर्फ लर्न कर रहा होता है पैसिवली भी और एक्टिवली भी. लेकिन आफ्टर 7 इयर्स उसका बिहेवियर जो है उसे मोल्ड करने में आपको डिफिकल्टी पेश आती है. आप इतना इजीली उसके बिहेवियर को चेंज नहीं कर सकते. तो यही सिचुएशन ये है कि जितना इंसान जो है उसकी एज ज्यादा होती जाएगी मेरे ख्याल में उसमें उतनी रिजिडिटी ज्यादा आ जाती है, फ्लेक्सिबिलिटी कम हो जाती है. तो दैट्स वाई मेरे ख्याल में स्टूडेंट्स में इन स्किल्स को इनकलकेट करना ज्यादा आसान है रादर देन एक्सपीरियंस्ड एम्प्लॉयज. यानी बूढ़े तोते पढ़ाने मुश्किल है. सर ये बात नहीं है, लेकिन ये कि उनके अपने पर्सनल बिलीव्स और एक्सपीरियंस इतने स्ट्रांग हो चुके हैं कि थोड़ा सा उनको मोल्ड करना उनके लिए खुद भी थोड़ा डिफिकल्ट है अपने उनको चेंज करना. सो ये पढ़िए डेफिनेशन जरा. ऑफ जी sir, definition of interpersonal relationship skills is clean and colleagues defined IPS as an umbrella term that refers to goal directed behaviors including communication and relationship building competencies employed in interpersonal interaction episodes characterized by complex perceptual and cognitive process, dynamic verbal and non-verbal interaction exchange, diverse roles, motivation, and expectancies. I know this is a long, long, long definition, and it is difficult to comprehend. But it it is an umbrella term, which means that it's a big term which includes so many things, and these include communication, relationship building competencies, and then verbal and non-verbal interaction exchanges, then motivation, diverse roles, and expectancies. Uh, you can see here that uh, two components include communication and relationship building. In communication, this includes active listening,
oral communication and written communication. Then assertive communication, non-verbal communication, that is part of it. And then relationship building has different components which include cooperation and coordination, then trust, then intercultural sensitivity, service orientation, self-presentation, social influence, conflict resolution, and negotiation. So, regarding communication styles, this is a case study. Please read it out. For you are approached by a coworker who asks you to finish a project he has started. He needs to leave early. You realize that project can't possibly get finished by 5 o'clock, the time you usually leave work. You have already made plans to meet an old friend for dinner. Now I will ask the participants what will be their reaction, because this is a straightforward scenario. It is not very complex because you need to do a decision about if you want to help your friend or you want to meet your friend outside the institution who is waiting somewhere else. So what are the different answers or reactions about the of the participants? um, any participant may comment. I think you can talk to the coworker, try to negotiate. If that isn't possible, if it's he has to really leave in case of an emergency, then you can delay your dinner plan with an old friend. But how would you decide? You know, what is your reaction? What is your decision in this scenario? I will first of all talk to the coworker. The only way is to communicate, to talk to the But you know, coworker first of all. the co-worker has the problem that he wants to finish because the next day the boss will see the work. So I will try to finish the work. I'll delay my dinner plan if he has to leave for an in case of emergency. Then I'll try Okay. to finish. Any other reaction from other participants? Interesting, very interesting. सर कोवर्कर्स अस्सलाम वालेकुम जी अस्सलाम वालेकुम है अच्छा सर ये भी जी हो सकता है कि हम जो है अपने दोस्त से कहें कि जी आप मेरे पास आ जाए तो यहाँ पर वो जब तक आएगा इतना टाइम उसको शायद मिल जाए और वैसे भी डिनर है तो मेरा ख्याल है कि वो 8 बजे के बाद ही सिनेरियो स्टार्ट होता है डिनर का तो आप उससे कह सकते हैं कि आप मेरे पास आ जाए उतनी देर तक जो मेरा एक यहाँ पर कोई काम चल रहा है जो कि बड़ा इंपॉर्टेंट है तो हम उतनी देर इकट्ठे बैठ जाते हैं फिर यहाँ से इकट्ठे डिनर के लिए जा सकते हैं तो आप अपने नहीं, फ्रेंड से डिनर भी तक तो वो खत्म ही नहीं होगा because the dinner is over there, you know, at around 7 o'clock, and you're likely to stay back till 7 o'clock even after that if you want to finish the work of your co-worker. बिल्कुल ठीक है सर ये तो दोनों में से एक उसमें चूज करना है आपने अरसलान साहब, दोनों को आप नहीं मैनेज कर सकते, तो फिर अगर एक चूज करें तो कौन सा करेंगे? सर ये असल में ये तो वो टाइम बाउंड सिनेरियो है फिर वो ये देखा जा सकता है कि फ्रेंड ज्यादा टाइम ले भी सकता है कि नहीं उससे उससे नेक्स्ट टाइम लिया जा सकता है क्योंकि अगर ये वर्क ज्यादा इंपॉर्टेंट है या दूसरा सिनेरियो सर ये हो सकता है कि आप कोवर्कर को कहें कि आप अपना काम करके जो है वो चले जाइएगा तो मैं जो जरा डिनर पे जा रहा हूँ फिर मैं वापसी पे आपसे जो है वो राब्ता कर लेता हूँ ये भी कम्युनिकेट किया जा सकता है Sir, I will talk to my coworker and then I will postpone, I think, my plan of dinner with my friend. I will try to complete my work. नहीं, आपका तो आप राशिद लतीफ में काम करते, डिनर एनी एनीबॉडी? हाँ जी, जी डॉक्टर नूरा nobody wants to join the dinner. जी sir, Dr. Noora is Hello. here with us. I would last Hello. like to ask her what's Hello, her Assalamu opinion. alaikum. I don't know if you can hear me. Can you hear me? Hello. Yes, जी sure, जी we can hear you. जी we can hear you.
Assalamu alaikum. वालेकुम Sir, अस्सलाम. regarding this scenario, what I'll do is, as I am already committed with the plan, so it won't be appropriate to cancel in the last minute. So that is for sure that what I'll do is I'll tell my co-worker that I'll work for 1 hour on your project. I'll finish as much as I can, but I cannot promise that I'll finish the work. So I'll do as much as I can for 1 hour, and then it can be resumed either by you or me tomorrow, no problem. But I'm already have my commitment with my other. I have already my other plans. So this is a different plan. You would like to join the dinner because another friend is waiting over there, isn't it so? Yes, sir. Bilkul. Yes, sir. Okay, let's see. Um, Assertive communication we are going to talk about, and this whole scenario is regarding the assertive communications when stakes are high. So I've this presentation is based on the rest of the presentation is based on presentation by this person, and objectives I've already discussed. So there are 4 different communication styles. One is passive, then hostile aggressive, manipulative aggressive, and assertive. So if you keep this scenario in your mind and you try to classify your reaction according to these 4 styles, then you will be able to see what kind of reaction you will have. Passive, regarding passive, do my feelings and needs matter? No, not much. Because if you decide to stay back in this scenario and you want to work for your co-worker, that means your feelings don't matter at all. Do the feelings and need of others matter? Yes, more than mine. And I have powerless, because you had already decided to go there, but you are canceling that appointment with the other friend. So it is not your own sweet will, but you are compelled by the feelings that you need to work for this very co-worker. So your response in this way is passive. If you're hostile aggressive, then your feelings, yes, more than others, more than do my feelings and needs matter? Yes, more than yours, यानी more than others. So इसमें अगर आप ये कहते हैं कि भाई मुझे क्या है, मैं तो पहले जाना है, I have to attend the dinner and I have already promised it. You bluntly refuse and you think that do the feelings and needs of other matter? Not much. And I have overpowering. So I'm telling straightway to the coworker that I'm sorry, I'm unable to do your job. This is hostile aggressive. Then manipulative aggressive. ये बिल्कुल ऐसा सिनेरियो है, अगर आप में से कोई देहात से बिलोंग करते हैं तो आपने देखा होगा कि आप में अगर मिडिल एज कुछ लोग मौजूद हों, तो जब गांव में ये होता था कि वो सालन वगैरह एक दूसरे से ले लेते थे, तो कोई खातून दूसरे से अगर सालन लेने गई है तो उसके जवाब ये हो सकता है कि जी अगर आप पहले आते तो ये मिल जाता। एग्रेसिव ये है कि आप मेरे लिए पका के गई थी, तो देन योर फीलिंग्स मैटर and the other person's feeling doesn't matter. So this is hostile aggressiveness. Manipulative aggressive, yes, but I won't say it outright. यानी कि मेरी फीलिंग्स तो मैटर करती हैं, लेकिन मैं ये नहीं कहूंगा। और इस मौजूदा सिनेरियो में ये कहा जा सकता है ठीक है मैं आपका काम कर दूंगा, लेकिन बाद में काम मैं छोड़ के चला जाऊंगा। देन आई हैव अ हिडन एजेंडा कि जी मैं ना वो काम करना नहीं है, लेकिन मैं इनकार नहीं कर सकता, सो मैंने कह दिया है कि मैं करूंगा। तो उसमें दूसरों की फीलिंग मैटर करती है, नहीं करती, लेकिन बताना नहीं है। असर्टिव ने आपकी फीलिंग भी मैटर करती है, दूसरों की भी मैटर करती हैं, और ये अर्न पावर है, ये आपने पावर ली है। इसमें फौरी तौर पे तो आपके ताल्लुकात खराब भी हो सकते हैं कि आपका कोवर्कर कह सकता है कि ये तो बड़ा अजीब आदमी है, इसने मुझे फौरन इनकार कर दिया है, वो आपसे नाराज भी हो जाएगा। बट इफ यू कीप ऑन बिहेविंग इन एन असर्टिव वे और आपका कम्युनिकेशन स्टाइल असर्टिव है, तो आहिस्ता आहिस्ता आपके रिलेशनशिप आपकी खराब होने की बजाय आपकी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होनी शुरू हो जाएंगी। एक्चुअली होता ये है
कि जब हम पैसिव होते हैं तो उसका मतलब ये होता है कि हम एक्चुअली रिजेक्शन को अवॉइड कर रहे हैं, कि हम रिजेक्शन बाय अदर्स को अवॉइड कर रहे हैं, एंड वी आर अफ्रेड ऑफ लोनलीनेस, हम बिल्कुल अकेले हो जाएंगे। ये एक अंदर एक फियर है जो कि आपके अंदर चल रहा होता है। अब पॉसिबल कोई भी है। अब ये देखिए, श्योर आई फिनिश इट फॉर यू एंड यू डू इवन दो यू हैव टू स्टे अंटिल 7। ये क्या है? Why would a person respond passively? ये पैसिव स्टाइल है। तो क्यों करेगा वो? उसकी रीजन के पीछे हम जाते हैं कि scared to say no और has no practice saying no। हमें प्रैक्टिस ही नहीं है नो कहने की, और doesn't think their needs are as important as others needs। वो समझते हैं कि हमारी नीड्स तो इंपॉर्टेंट है ही नहीं है। वो एक जो है ना ठेकेदार है दूसरों की चीजों के। Doesn't want anyone to be mad at them and maybe has been raised to believe you always have to help others। तो एक उसको शुरू में ही इसकी तरबियत ऐसी की गई है कि जी हमेशा दूसरों की मदद करनी जरूरी है। I recall a scenario when I was in Punjab Medical College. One day I was supposed to work on a project which was regarding collaboration with the pharmacy department of Government College University Faisalabad and Punjab Medical College, and I was supposed to attend a meeting with the professor of medicine at another place other than the college. And then on other hand, my principal had asked me to work for certain other tasks. So I was working there and then for the principal. So I delayed my, timing, and I reached there 1 hour after the fixed time. And the professor of medicine told me a story about a person who was Hardil Aziz, Mullah Hardil Aziz. तो मुल्ला हरदिल अजीज जो उसकी स्टोरी ये है कि एक गांव था और उसके वो नदी के क्रॉस उनका जो वर्किंग एरिया था, जो वर्किंग ऑफिसेज थे, वो नदी के दूसरी तरफ थे। वो नदी में वो घुटनों घुटनों पानी होता था, ज्यादा नहीं होता था। तो उनके पास और कोई मीन्स नहीं थे, तो वहाँ ये वॉलंटियर होते थे जो उनको अपने बैक पे बिठा के नदी पार करवाते थे ताकि उनके कपड़े खराब ना हो जाए। तो एक बहुत ही डेडिकेटेड वॉलंटियर था, उसका नाम था मुल्ला हरदिल अजीज। अब वो करता क्या था कि वहां सुबह जाके खड़ा होता था और लोगों को पहुंचाता था। अब एक बंदे को लेके जा रहा है अपनी बैग पे और वो दरमियान में पहुंचा है, पीछे से एक और बंदे ने कहा कि देखिए मैं तो बहुत लेट हो रहा हूँ, मेरा तो बहुत काम खराब हो रहा है, पता नहीं मैं कैसे ऑफिस पहुंचूंगा। तो उसको वो दरमियान में नदी में फेंक देता था और वो जाके दूसरे को उठा लेता था। तो समटाइम्स हम ये भी करते हैं कि हम मुल्ला हरदिल अजीज बन जाते हैं, और वो भी एक पैसिव हमारा स्टाइल है। अब देखिए उसकी कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे। आपने अपनी ओन नीड्स को सेटिस्फाई नहीं किया, यू मिस योर डिनर डेट एंड लेट डाउन योर फ्रेंड। जिसको आपने वादा किया था उसको भी तो लेट डाउन कर दिया आपने। आप फ्रस्ट्रेट जरूर होंगे, बिटर होंगे, annoyed होंगे, victimized फील करेंगे। You don't feel great about this situation, but you keep telling yourself you've done the right thing. Maybe another brick has been added to the wall of resentment. हमारी एक resentment wall होती है जिसमें हम पछताते रहते हैं और हम कुड़ते रहते हैं। resentment एक्चुअली मैं समझता हूँ कुड़ना ज्यादा मुनासिब लफ्ज है। तो हमारे कुड़ने में एक और उस इमारत में, कुड़ने वाली इमारत में एक और हमने ईंट लगा दी है, वो अब इमारत बड़ी होती जा रही है। लेट्स लुक एट इट फ्रॉम अदर पॉइंट ऑफ व्यू। अब इसमें है कि एक है कि जी व्हाई शुड आई हेल्प यू आउट, आई हैव माय ओन प्लान्स फॉर द इवनिंग एंड यू वॉक अवे। व्हाट काइंड ऑफ रिस्पॉन्स दिस इज अमंग फोर? Hostile aggressive. It is hostile aggressive. So what's going to happen? Why would a person respond in a hostile aggressive manner? अब इसकी हम जाते हैं कि बुनियाद में क्या है। Maybe you think your needs are more important than needs of others. Maybe you already have a bad relationship with the other person. Maybe you have already feeling stressed.
तो इसमें ये रीजन हो सकती है। और कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे? You get your needs met, आपने खाना खा लिया, but you have been a bully, implying that needs of others are not important. The other person feels uncomfortable, angry, or embarrassed. The relationship is damaged, that the person may never ask you for a favor again, but you also will probably never be able to ask him for a favor. तो आपके एक तरह से फिर उससे ताल्लुकात खराब हो गए। तो वो एक और ब्रेक आपने ऐड कर दी अपने कुड़ने वाली, वो जो आप समझते हैं कि झोपड़ी है या कुड़ने वाला एक महल है, उसमें एक और आपने ब्रेक ऐड कर दिए। अनदर स्टाइल, श्योर आई विल फिनिश इट फॉर यू एंड यू वर्क ऑन दिस प्रोजेक्ट अंटिल 5 एंड देन लीव टू मीट योर फ्रेंड, योर co-worker's project isn't finished, but then that's not your problem. You'll just explain to him tomorrow that you did all you possibly could. He could get into trouble, but it was his ultimate responsibility. उसी की थी ना। तो क्यों हम करते हैं ये कि यू आर अफ्रेड टू से नो, लेकिन आप अपनी नीड को इंपॉर्टेंस समझते। कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे डॉक्टर सादिया? आपके ख्याल में क्या होगा जब आप मैनिपुलेटिव एग्रेसिव हैं? सर आपने मेरे उससे ख्याल वादा में कर लिया? नहीं सर, मेरे ख्याल में यू शुड बी क्लियर कि आपने करना है या नहीं करना है। इससे जो नेक्स्ट पर्सन है वो अपनी लायबिलिटी या अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को आप पे ट्रस्ट करके डाल के गया है। तो मेरे ख्याल में ये ट्रस्ट लूज करने वाली बात है। ये जो कम्युनिकेशन स्टाइल है, इट मस्ट नॉट बी अडॉप्टेड विद योर कोवर्कर्स। सर रिलेशनशिप डेफिनेटली खराब होगी तो ना। दिस इज मैनिपुलेटिव। तो इससे होगा क्या? पैसिव एंड कंप्लायंट है, बट यू एंड अप बीइंग अग्रेसर। आपने वादा तो कर लिया लेकिन आपने उसका बेड़ा गर्क कर दिया। ठीक है जी। आखिरी लाइन पढ़े तो आपकी क्या पिक्चर बनेगी? Sir, you have not been honest about your own needs. You will be viewed as a wolf in sheep's clothing, not trustworthy. तो ये पक्की बात है, आपका ये इमेज बनेगा। जी बिल्कुल। नेक्स्ट, अब क्या कह रहा है वो? Sir, possible responses. I have a previous engagement. नेक्स्ट I'm नेक्स्ट पे sorry. जाए वो रिस्पॉन्स पे। Yes, sir. Yes, sir. I have आई हैव अ previous प्रीवियस। engagement. I'm sorry, I can't help. I need to honor my previous commitment in the future. In the future, if you ask me with some advance warning, I would be more able to help. सो यू सी, हम इसे असर्टिव क्यों होना चाहते हैं? यू रिस्पेक्ट द फीलिंग्स ऑफ अदर आर important as well as yours, yet you also honor your own feelings. तो ये विन विन सिचुएशन है। वरना पैसे में the other wins, you lose. Hostile aggressive में you win, he loses. Manipulative aggressive में you win, he loses. And assertiveness में you win, he win. Yes. तो consequences क्या होंगे? You have established clear boundaries between yourself and others. You feel good about yourself because you have been honest and direct. You made your needs known in a respectful way. You maintained a positive relationship with your co-workers. You seem trustworthy to those around you. आप बताएं ऑनेस्टली, जितने पार्टिसिपेंट्स हैं जो के असर्टिवनेस को करते हैं, दे प्लीज रेज हैंड्स। इस सिचुएशन में जो किया होता उन्होंने। डॉक्टर सादिया, आप गिनिएगा कितने लोगों ने रेज किया हैंड? So I can't view the people who are raising their hands. Nasir, can अच्छा, you see? कोई देख भी रहा है रेज हैंड करने में? Nasir, sir, आप बता दें, पांच पार्टिसिपेंट लोगों के हाथ खड़े करके हैं। बता दें। जी हाँ, 5 लोग हैं। Sir, 5. 5 out of Out of
12, I think 5 out of 12. तो आप ये देखिए कि आधे से कम लोग हैं जो कि वो कर रहे हैं, तो जो असर्टिव हैं। तो इसका मतलब ये है कि वी नीड टू train ourselves as well as inculcate these interpersonal skills to our students. Okay, so advantages of being assertive is generates mutual respect and trust, facilitates collaboration, maintains the relationship and feelings of safety, contributes to self-esteem, and disadvantages are it takes time, requires risk, and requires skill and practice. इसके लिए एक बुक है, डोंट से यस व्हेन यू वांट टू से नो। अगर आपको वो कहीं से मिल जाए तो अगर आप वो पढ़ेंगे तो आपको नो करना आ जाएगा। और उसकी प्रैक्टिस में वो ये बताते हैं कि अगर आप ये प्रैक्टिस करना चाहते हैं कि नो कैसे कहना है, तो 2-3 एक्सरसाइजेस हैं वो आप कर सकते हैं, खासतौर पर लेडीज के लिए। यू गो टू अ क्लॉथ शॉप और ये दिल में नियत करके जाए कि हमने वहां से कुछ नहीं खरीदना, या किसी भी शॉप में चले जाएं और वहां पे जाके उससे दुकानदार से मुख्तलिफ आप चीजें निकलवाएं, एक एक करके बहुत सारी चीजें, बहुत सारी वैरायटी निकलवाएं, और वो आप ये बाद में कहें कि मैंने नहीं लेना। सो से नो, बट कीपिंग इन माइंड कि वो भी आजाद है, वो आपको कहे कि मैंने नहीं दिखाना। तो ये इसी तरह आप होटल में जाएं और पानी का ग्लास मांगे, अब पानी का ग्लास मांगेंगे और उसके बाद फिर आप, ये एक प्रैक्टिस है, या फिर बार बार रास्ता पूछें, तो ये भी प्रैक्टिस है असर्टिवनेस कम्युनिकेशन को अडॉप्ट करने के लिए। आई विल स्ट्रेट वे गो टू द नेक्स्ट टॉपिक, और वो है हमारा इमोशनल इंटेलिजेंस। ये क्रूशियल कन्वर्सेशन का पार्ट था, लेकिन टाइम इतना हमारे पास नहीं है तो कि उसको हम टेकअप कर सकें। हम इमोशनल इंटेलिजेंस की बात करते हैं, इमोशनल इंटेलिजेंस एट वर्क। कैन यू सी दैट? Yes. Yes, sir. Yes, sir. Yes, So, sir. what do we mean by emotional intelligence? या आपके ख्याल में आईक्यू ज्यादा इंपॉर्टेंट है या ईक्यू ज्यादा इंपॉर्टेंट? जी, So I think पार्टिसिपेंट्स प्लीज। equally दोनों important हैं, IQ भी और EQ भी। But if we have to think what is more important. Sir, I'll give 60% for EQ and 40% for IQ. I mean, EQ more important. However, IQ is also important. और बाकी जो हैं पार्टिसिपेंट्स क्या कहते हैं? Sir, EQ is more important as compared to IQ, because in EQ यानी इमोशनली इंटेलिजेंट, उसमें आपको एक इमोशनल सिचुएशन में रिस्पॉन्ड करना होगा। सो उसमें जो है ना वो ज्यादा वो चाहिए। सो EQ is more important as compared to IQ. This is what I believe. Okay, and what about other participants? Yes, sir. I also believe that EQ is more important than IQ. Who in the participant group thinks that IQ is more important than EQ? Anybody? So all agree on this point. And what do we mean by this is IQ means intelligence quotient, EQ means emotional quotient, and EI means emotional intelligence. Emotions क्या है? Very interesting topic. Happiness, fear, anger, affection, shame,
disgust, surprise, lust, sadness, elation, love, frustration, anxiety, failure and achievement. आगे पढ़िए डॉक्टर सादिया. The above are the emotions which directly affect our day to day life. There are two dimensions of emotions. Physiological side, emotion is a complex state of human mind involving bodily changes of widespread character, such as breathing, pounding heart, flushed face, sweating palms, pulse rate, gland secretions, etc. Psychological side is a state of excitement or perturbation marked by strong feeling. साइकोलॉजिकल साइड क्या होगी? हेलो Hello? हेलो जी, साइकोलॉजिकल साइड. A state of excitement or perturbation marked by strong feelings. Okay, so these are the feelings. Emotion is something, physiological side is something which you can see, which you, अगर आप जंगल में जा रहे हैं और आपको ख्याल भी आ गया कि आगे कोई जानवर आ गया है, तो आपका हार्ट पाउंड करने लग जाएगा, आपके हाथों में पसीना आ जाएगा, पल्स रेट ज्यादा हो जाएगा. तो ये एक इफेक्ट फिजियोलॉजिकल भी होता है जो कि डिफरेंट इमोशंस में वन कैन हैव. एंगर में क्या है? एंगर के अब और कई वो वेज हैं, उसके ब्लेंड किसमें एंगर में फ्यूरी है, आउटरेज है, रिजेंटमेंट, अनॉयंस, हॉस्टिलिटी. लव में एक्सेप्टेंस, फ्रेंडलीनेस, ट्रस्ट, so on. I mean, there are different ways, or there are different ways in which these emotions they portray, or they can be seen in different situations. So all these are the words or conditions which go with these emotions. Example क्या है emotion के? She is too sensitive. He takes everything too personally. He is jealous of his colleagues. My boss is always in a hostile mood. So you see, these are the everyday sentences we speak about our different acquaintances and friends, and in our work as well as in our family life. She does not understand the feelings of others. He is always nagging others. The HOD blurts things out without thinking of others. Nobody understand, listen to me. This is something very common. Most of us has this complaint. Nobody understands or listens to me. The management is way out of touch with employees' emotions. Why does it happen with me only in life? I am always nice with the people around me. The above statement refer to various emotions we experience in our day-to-day life. ये पढ़िए exactly EQ है क्या? Emotional intelligence or emotional quotient is simply defined as knowing what feels good, what feels bad, and how to get from bad to good. Knowing your emotions and knowing emotions of others. It refers to emotional management skills which provide competency to balance emotions and reasons so as to maximize long term happiness. What is the difference between pleasure and happiness? Anybody, please. डॉक्टर अकीला है लाइन पे? Sir, I think happiness is contentment with whatever you have, and pleasure is something above happiness. What about feeling? How do you feel pleasure and how do you feel happiness? आपके अंदर क्या होता है? हो क्या रहा है? सर मुझे ये लगता है कि जो प्लेयर है वो मोमेंटरली है, तो कुछ देर के लिए होता है, और जो हैप्पीनेस है, अगर एक इंसान कंटेंटेड है और चीजों को पॉजिटिवली लेता है, तो वो उसकी जो फीलिंग्स है हैप्पीनेस वाली, वो लॉन्ग टर्म. दैट इज वेरी राइटली यू हैव सेड दैट प्लेयर इज शॉर्ट लिव्ड. It is a momentarily
feeling which comes and goes, but the happiness is like steady feeling, it goes forever. If you work for your own, then you have pleasure. If you work for others, then you have happiness. Yes. Emotional intelligence is the capacity for recognizing your own feelings. एक तो ये कि हम अपनी feelings को भी समझना जरूरी है कि इस वक्त मैं गुस्से में हूँ, मैं अफसोस में हूँ, मैं फील कर रहा हूँ और दूसरे क्या फील कर रहे हैं. उसके बाद ये है कि हम उनको मोटिवेट कैसे कर सकते हैं और हम मैनेज कैसे कर सकते हैं इमोशंस को हमारे अंदर या हमारे जो रिलेशनशिप्स हैं उनके अंदर. इमोशनल इंटेलिजेंस डिस्क्राइब्स एबिलिटीज डिस्टिंक्ट फ्रॉम बट कॉम्प्लीमेंट्री टू एकेडमिक इंटेलिजेंस. वो उनसे मुख्तलिफ होती हैं लेकिन कॉम्प्लीमेंट्री है. एकेडमिक इंटेलिजेंस बहुत जरूरी है लेकिन ये उसके साथ इक्वली नेसेसरी है जो कि आपको सपोर्ट करती हैं आपकी एकेडमिक वर्किंग में. So it is very important for faculty members to acquire this or to inculcate this skill in the students. Are we giving EQ education in schools, colleges? What do you say? So definitely not. No, हम नहीं दे रहे ना. Our education system gives stress on IQ and not on EQ. इसका सबूत क्या है? सर हमें हिस्ट्री, उर्दू, इंग्लिश, जियोग्राफी, फिजिक्स, एंथ्रोपोलॉजी, बॉटनी, कंप्यूटर वगैरह पढ़ाया जाता है लेकिन हमें कभी नहीं पढ़ाया जाता कि हाउ टू हैंडल फ्रस्ट्रेशन, एंजाइटीज, स्ट्रेस, फेल्योर, डिप्रेशन, बर्नआउट, इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्सेस और ईगो प्रॉब्लम्स. ये हमें कभी भी बहुत कम ऐसा होता है कि हमें पढ़ाई जाए या फिर हम इसकी तरफ तवज्जो ही नहीं देते एज स्टूडेंट्स एंड इवन एज फैकल्टी मेंबर्स. We are not told to learn how to manage emotions, interaction, coordination, adjustment, and communication. We are expected to learn all these from our parents, peer group of other role models. At the latest stages of life, we are told to master emotional competencies to be successful. पहले तो हमें पढ़ाया नहीं जाता और हमें एक्सपेक्ट किए जाते हैं खुद ही घर से सीख के आए या अपने दोस्तों से सीख के आए और फिर हमें कहते हैं कि सक्सेसफुल होने के लिए इमोशनल इंटेलिजेंस बहुत जरूरी है. Sir, may I answer your question? At that time, I was hanged, sir. Can help you to be successful to the extent of 20% only in life. आप सोचें जरा. The rest of 80% success depends on your EQ. Can you imagine? कि EQ कितनी इंपॉर्टेंट है और IQ से उसका क्या रिलेशनशिप है. IQ होता क्या है सक्सेस में? IQ से आप क्या करते हैं? एग्जाम पास करते हैं, कंपटीशन क्लियर करते हैं, परसेंटेज ऑफ मार्क्स इन स्कूल्स एंड कॉलेजेस, एकेडमिक क्वालिफिकेशन एटसेट्रा एटसेट्रा. अर्निंग फैट सैलरी, top position in workplace, being rich and wealthy, powerful, dominating, being influential जो है ये भी सक्सेस का पार्ट है. तो सक्सेस एक्चुअली ये है या सक्सेस ये है. The word success is a relative term. Living a healthy and happy married life may be an indicator of success. Reaching a top position in career may be an indicator of success for others. For some, having a satisfying job life, तो ये एक relative term है. कुछ के लिए कुछ success होती है कि जी आप HOD बनते हैं, आप प्रिंसिपल बनते हैं, आप वाइस चांसलर बनते हैं, ये एक सक्सेस है. कुछ के लिए ये होता है कि आप बिल्कुल स्ट्रेसफुल लाइफ से दूर हैं और आप सब्जेक्ट को समझते हैं, आप अपना काम खूब से कर रहे हैं, आपकी फैमिली लाइफ मुतमिन है, आपकी जो अर्निंग वगैरह है वो आप उससे सेटिस्फाइड हैं. और कुछ लोग पर्सनल सेटिस्फेक्शन को इंपॉर्टेंस देते हैं, कुछ जॉब सेटिस्फेक्शन को इंपॉर्टेंस देते हैं. ओनली द टेंजिबल अचीवमेंट्स मे नॉट बी इंडिकेटर सक्सेस. ये आप देखें कि जो हम सॉलिड चीजें हासिल करते हैं, ये पोजीशन ले ली हमने, एक अपनी जॉब में ऊपर चले गए, ये टेंजिबल है, ये नजर आने वाली है.
Many a times, non-tangible performance or achievements may be termed as successful. IQ gets you hired. EQ gets you fired or promoted. So that EQ, less EQ fired and more EQ promoted. So professional success builds on IQ as well as EQ. Experts क्या कहते हैं? ये पढ़िए जरा. Psychologists, psychiatrists, management consultants, and medical doctors have been proving that there are personal characteristics called emotional intelligence, which are responsible for the ways how we behave, how we feel, how we relate to others, how well we do at our job, and how healthy we are. Okay. तो experts कहते हैं कि ये इसके बारे में है कि how we feel, how we behave, and ये पढ़िए. Emotional intelligence tendencies and result in being uncomfortable with other people, not being happy with your job, not succeeding at your job, and even being physically and psychologically unhealthy with stress related problem or not having satisfactory interpersonal relationship. तो ये सारी चीजों से उसका इमोशनल इंटेलिजेंस का ताल्लुक है. हेड एंड हार्ट को ये उसने फर्क किया है. आईक्यू जो है वो हेड है और ईक्यू हार्ट है. डॉक्टर अकीला है लाइन पे? सर मेरे ख्याल में IQ इज अकल एंड EQ इज यस सर. इश्क. हाँ जी. डॉक्टर अकीला बताइए कि इकबाल क्या कहते हैं हार्ट के बारे में. सर 1 मिनट मुझे बस दे दीजिए, बस 1 मिनट दे दीजिए, क्योंकि मैं याद रखने में अच्छी नहीं हूँ. बस 1 मिनट मुझे दे दीजिए सर. बल्कि मैं ये कहूंगी कि अगर आपके सर वो है ना, वो एक शेर है अल्लामा इकबाल का कि अक्ल सिर्फ, यानी कुछ ऐसा शेर है, मैं कहूंगी कि वो आप जो है ना वो आप पढ़े. चले मैं सुनाता हूँ. अच्छा है दिल के साथ रहे पासमान अक्ल. अच्छा है दिल के साथ रहे पासमान अक्ल, लेकिन कभी कभी इसे तन्हा भी छोड़ दे. अच्छा है दिल के साथ रहे पासमान अक्ल, लेकिन कभी कभी इसे तन्हा भी छोड़ दे. इसको एक्सप्लेन कीजिए. सर मैं एक शेर पढ़ती हूँ, ठीक है? मैं एक शेर पढ़ती हूँ. इस वक्त मेरे हाथ में कुल्लियात है. अकल ने एक दिन ये दिल से कहा, बूले बटके की रहनुमा हूं मैं. अकल ने एक दिन ये दिल से कहा, बूले बटके की रहनुमा हूं मैं. अगर देखा जाए तो इस शेर में सब कुछ कह दिया उन्होंने जी. हूं जमी पर गुजर फलक पे मेरा, देख तू किस कदर रसा हूं मैं. काम दुनिया में रहबरी है मेरा, मिस्ले खिजरे हुजुस्ता पा हूं मैं. हूं मुफस्सर किताब हस्ती की, मजहरे शाने किबरिया हूं मैं. बूंद एक हूं की है तू, लेकिन गैरते लालय बे बहा हूं मैं. सर अगर आप इजाजत दे तो पूरी पढ़ दूं? नहीं, वो ना अकल, वो दिल क्या कहता है उसके 1-2 शेर पढ़ दें, क्योंकि हो सकता है सब कुछ शायरी से दिलचस्पी हो. ठीक है. दिल कहता है, इसके बाद दिल ही ने कहा, दिल ने सुनकर कहा ये सब सच है, पर मुझे भी तो देख क्या हूं मैं. राज हस्ती को तू समझती है और आंखों से देखता हूं मैं. है तुझे वास्ता मजाहिर से और बातिन से आशना हूं मैं. इल्म तुझसे ये अब इसमें देखिए टेंजिबल और नॉन टेंजिबल की बात हो रही है. बिल्कुल. जो तो सर ये जरा आप हमारे पार्टिसिपेंट को जो है वो एक्सप्लेन कर दे, क्योंकि बात तो बड़ी गहरी कह दी इकबाल ने. थैंक यू सर. जी. कि टेंजिबल चीजें जो कि हमें नजर आती हैं, हमारे सामने हैं, और नॉन टेंजिबल वो हैं जो कि हम फील करते हैं, हम सिर्फ महसूस कर सकते हैं. वो उनका ताल्लुक EQ से है, और टेंजिबल जो है उनका ताल्लुक IQ से है. तो दोनों जो है आपको जरूरी है. और बल्कि ये है कि दिल को अकल का पासबान उसके ऊपर रहे, लेकिन कभी कभी दिल को तना छोड़ दे.
क्योंकि assertiveness ट्रेनिंग में हम ये कहते हैं कि you have the right to become illogical at times. As a person you have got right. Even आप अपनी फैमिली लाइफ में, हस्बैंड वाइफ के रिलेशनशिप में, अपने वर्कर के रिलेशनशिप में, डोंट ऑलवेज गो फॉर रैशनल थिंग्स. अगर आपका दिल कर रहा है, एक्सप्लेन कर दे उसको. इससे रिलेशनशिप में दोनों पहलू आ जाएंगे, आपके इमोशंस भी इन्वॉल्व होंगे और आपके जो है वो अकल भी इन्वॉल्व होगी. और आपको पता है कि जी अगर अल्लाह तक पहुंचना है तो उसके लिए इकबाल कहते हैं कि गुजर जा अकल से आगे, कि ये नूर चरागे राह है, मंजिल नहीं है. तो ये वो फर्क है जो 20% और 80% का इकबाल ने किस तरह बयान किया है. लेट्स मूव ऑन. पर्सनैलिटी में थिंकिंग पार्ट भी है और फीलिंग पार्ट भी है, और ये दोनों मिलके EQ एस्टेब्लिश करते हैं. हाई IQ की क्या होती हैं? A time to wait and time to watch, a time to be aggressive and time to be passive. ये खुद डिसाइड करता है. A time to be together and time to be alone, a time to fight and a time to love, a time to work and a time to play, a time to cry and a time to laugh, a time to confront and a time to withdraw, a time to speak and a time to be silent. वो कैरिड नहीं होता, वो इमोशन उसको पकड़ के नहीं लेके जा सकते, वो इमोशन के ऊपर कंट्रोल करता है. मूड ड्रिवन नहीं होता, मूड को वो ड्राइव करता है. तो फिर उसका कंट्रोल और उसका EQ ज्यादा एस्टेब्लिश. लो वाला क्या कहते हैं? हम देखें, मैं तो अक्सर ये ऐसी सिचुएशन में होता हूं कि मैं ये कहता हूं अगर ये ना होता तो वो होता. इफ आई ओनली हैड अ डिफरेंट जॉब. ये हम कहते हैं कि नहीं कहते? ऐसे ही सर. अगर राशिद लतीफ कॉलेज इतना दूर ना होता तो पता नहीं मैं क्या कर देता. If I only I had finished graduation, अगर मैंने अभी PhD कर ली होती. If I only had, इसके लिए एक बड़ा इंटरेस्टिंग फिक्रा है कि अगर अगले ना मरते तो हमारी पूरी फौज होती. क्या ख्याल है आपका? इम्पॉसिबल अगर जो चीज पहले है. वाले हैं हमारे जी ना मरते तो क्या होता? हमारा फौज हमारी अपनी होती. If only I had married someone else. ये लो IQ की सारी निशानियां हैं. आप पढ़िए दोबारा इनको. If only I had a different job, if only I had finished graduation, if only I had been handsome, beautiful, if only my spouse had stopped drinking, if only I had been born rich and famous, if only I had good contacts, if only I had better friends, and if only I had married someone else. बेसिकली जो चीज नहीं है उसके बारे में जो है वो आप पुश कर रहे हो. कई दफा हम कहते हैं ये. अच्छा, जो ट्रेडिशनलिस्ट है वो कहते हैं कि इमोशन क्या करते हैं? पढ़िए जरा. Distract us, increase our vulnerability, cloud our judgment, inhibit free flow of data, must be controlled. और हाई परफॉर्मेंस क्या कहते हैं? Say that emotions motivate us, increase our confidence, speed our analysis, build trust, provide vital feedback, must be managed. जब कोई भी इमोशन आता है ना तो उसमें ये होता है कि हमारा फ्रंटल कॉर्टेक्स से कनेक्शन टूट जाता है. जो अगर वो हमें ड्राइव कर रहा है इमोशन, अगर हमें वो खींच के लेके जा रहा है, तो नॉर्मली ये होता है कि हमारा जो एरिया है ना, एमिगडाला और हिप्पोकैम्पस और कुछ एरिया जो है जिससे इमोशन, लिम्बिक सिस्टम जो है, तो इससे कनेक्शन जो है फ्रंटल कॉर्टेक्स तक जाते हैं, तो अक्ल जो है वो पासमान होती है. लेकिन जब हमारे इमोशन हमें ओवरराइड कर रहे होते हैं तो इसको हम कहते हैं अमिगडाला हाईजैक. ये जो साइकियाट्रिस्ट हैं इसको कहते हैं अमिगडाला हाईजैक. तो अमिगडाला हाईजैक कर लेता है सारी डिसीजन मेकिंग को और वो फ्रंटल कॉर्टेक्स तक कनेक्शन ऑफ कर देता है. तो वो उनमें होता है जिनमें EQ कम होता है.
EQ ज्यादा हो तो हम उसके साथ साथ अकल को भी रखते हैं और हम इमोशन के ऊपर बैठ के अपना काम कर रहे होते हैं। इमोशनल स्किल्स क्या क्या आनी चाहिए? इमोशनल कॉम्पिटेंसी, इमोशनल और इमोशनल सेंसिटिविटी। अब कॉम्पिटेंसी क्या है? हेलो, आर यू लिसनिंग? Yes, sir. जी सर। So there was little कोई भी नहीं सुन रहा? जी सर। सर सुन हाँ रहा जी, है। अब आगे। जी जी बिल्कुल। अच्छा जी, तो ये इमोशनल कॉम्पिटेंसी में क्या क्या है? Sir, tackling emotional upsets, high self-esteem, handling egoism, handling inferiority complex. ये आपकी कॉम्पिटेंसीज जो आपको अचीव करनी है कि कैसे हैंडल करना है इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स। ये जो सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स होता है वो क्या होता है? Sir, false Anybody? grandiosity. जी सर, false grandiosity एक false imagination of grandiosity is सर फीलिंग ऑफ बीइंग सुपीरियर टू अदर्स। हाँ जी, ये लेकिन ये है कि अगर आप उसके नेचर में जाएं तो एक्चुअली वो इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स होता है। सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स एज सच एग्जिस्ट नहीं करता, वो समहाउ अंदर हम इंफीरियर फील कर रहे होते हैं, उसको हम कंपनसेट करने के लिए वी बिहेव इन अ डिफरेंट वे। तो इन सब को टैकल करने के लिए जो चाहिए वो इमोशनल कॉम्पिटेंसी है। मैच्योरिटी क्या है बताएं? self awareness, developing हाँ, others, delaying gratification, adaptability and flexibility. राइट। सो ये चीजें हैं पार्ट ऑफ इमोशनल मैच्योरिटी। सेंसिटिविटी क्या है? Understanding threshold of emotional arousal, हाँ जी, empathy, improving interpersonal relations, communicability of emotions. इमोशन हम दूसरे से जाके डिस्कस भी कर लेते हैं कि दिस इज हाउ आई फील। अच्छा, अगर आपको गुस्सा आ रहा हो तो आप उसको कैसे हैंडल करना चाहिए आपके ख्याल में? एनीबडी, एनी पार्टिसिपेंट? सर मेरे ख्याल में जब आपको कोई मेरे ऊपर गुस्सा आ रहा है कि ये अपनी ना ये बहुत इसको एक्सटेंड कर रहे हैं ये जो है प्रेजेंटेशन को, और ये अब टाइम जो है वो ऐसे ही खींच रहे हैं, तो आप उसको कैसे हैंडल करेंगे? सर पॉजिटिव थिंकिंग से। कैसे यानी एक्चुअली करेंगे क्या आप? Sir, I will talk to you that I am not comfortable with this long presentation of yours. I will talk to you. I will communicate my problem with you. That's great. That's being assertive. लेकिन ये है कि आमतौर पर हम काइंड ऑफ एम्बैरेस फील करते हैं कि मैं कैसे बात करूं, मैं कैसे बात ना करूं, और उससे फिर रिजेंटमेंट जो है वो बढ़ती चली जाती है। ये एक स्टडी है 80 PhDs, और फिर एक स्टडी है इंश्योरेंस सेक्टर की। एक ये इंडियन चूंकि प्रेजेंटेशन का पार्ट मैंने लिया था तो वो उनके बारे में है स्टडी स्ट्रेस और बर्नआउट की, तो थोड़ा सा मैं इसको रिफर करूंगा। ये पढ़िए जरा। A study of 80 PhDs by EQ Consortium. A study of 80 PhDs in science who underwent a
battery of personality test, IQ test, and interview in 1950s when they were graduate student at Berkeley. 40 years later, when they were in their early 70s, they were tracked down and estimates were made of their success based on resumes, evaluation by experts in their own field, and sources like American Men and Women of Science. It turned out that social and emotional abilities were 4 times more important than IQ in establishing professional success and prestige. हाउ स्ट्रॉन्ग दिस, ये देखिए ना, कोहॉर्ट है, बेसिकली प्रोस्पेक्टिव स्टडी है, एंड दैट वेंट ऑन फॉर 40 इयर्स, और वो 80 PhDs को वो देखा गया, स्टडी किया गया फॉर 40 इयर्स, और उन्होंने देखा कि 4 टाइम्स ज्यादा EQ इंपॉर्टेंट थी उनकी सक्सेस में rather than IQ. So you can see how important it is. Insurance sector में क्या किया? In other research, it has been found that insurance salesperson who were optimists sold 30% more insurance policies in their first 2 years than did pessimists. मैंने एक दफा इंश्योरेंस वाले को बुलाया, पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस वाले, मैंने कहा जी आपकी क्या क्या हैं प्रोडक्ट्स, क्या क्या है, तो उसने फौरन कहा कि जी देखें हमारी बहुत शानदार प्रोडक्ट्स हैं, अब फर्ज करें अपनी इंश्योरेंस कराते हैं और आप एक प्रीमियम पे करते हैं 1 लाख रुपया, और अगले महीने आप फौत हो जाते हैं, तो उसके बाद जो है वो आपको और कुछ नहीं पे करना पड़ेगा, और वो सारे जो पैसे इंश्योरेंस के आपको मिल जाएंगे। तो मैंने कहा भाई साहब आपने कभी पहले भी इंश्योरेंस कोई बेची है, ये फर्स्ट टाइम कोशिश कर रहे हैं? क्योंकि देन आई वाज इमीडिएटली मैं फौरन जो है ना वो उससे वो बैकआउट कर गया और मैंने उसको भेज दिया। तो यू कैन सी कि वे आउट इसका ताल्लुक इंटरपर्सनल रिलेशनशिप से, स्किल से भी है, और वो उसका पार्ट EQ है। तो ऑप्टिमिस्ट जो है वो और तरीके से बात करते हैं और पेसिमिस्ट जो है वो और तरीके से बात करते हैं। IAS ऑफिसर्स, इंडियन After studying 60 IAS आर्मी officers of Assam cadre, it was found that 77% of them fall in the category of average EQ. Only 15% showed high EQ. तो इसका मतलब ये है कि जी हमारे जितनी सिलेक्शन है उनमें, और बाद में भी हम उस पर तवज्जो नहीं देते कि जी हम उनकी EQ को एस्टैब्लिश करना है, बेहतर करना है या प्रोग्रेस करवाना है। A study of stress and burnout, the managers high on EQ were low on burnout, implying that they can cope up better with stress. हाँ जी, ये जो हाई EQ वाले हैं वो स्ट्रेस को बेटर कोप अप करते हैं। ये देखें, डू डिफरेंट प्रोफेशन, हाँ ये बड़ा इंपॉर्टेंट स्लाइड है, अगर आप इसको गौर से देखें हम कहाँ फॉल करते हैं। Do different professions require different level of EQ? Cluster 1 extremely high, artists, insurance, advertisement, social work. Cluster 2 high, that is teaching, legal, tourism, politics, business, entrepreneurship, and police. Cluster 3 is average, judiciary, administration, information technology, medicine, banking, engineering, accountancy, and nursing. ये आपने देखा, ये कोर साइंसेज हैं, ये प्रोडक्ट से और टेंजिबल चीजों से रिलेटेड है, मेडिसिन भी, बैंकिंग भी, इंजीनियरिंग भी, अकाउंटेंसी, नर्सिंग। एक्चुअल कुछ हाथ में आता है, कुछ कर रहे होते हैं, इसमें फीलिंग इतनी इन्वॉल्व नहीं है, तो उसके लिए आपकी एवरेज EQ भी काफी रहती है। लेकिन टीचिंग जो है ना वो हाई EQ चाहिए, क्योंकि आप स्टूडेंट से डील कर रहे हैं, और हमें एक्सट्रीमली हाई की जरूरत नहीं है। मिथ्स क्या क्या हैं? Being emotional intelligence doesn't mean a weak, submissive, or defensive personality. Being क्योंकि हम ये high, कहते हैं कि अगर आप EI इमोशनली इंटेलिजेंट ज्यादा हैं तो फिर आप सबमिसिव हैं, डिफेंसिव हैं, हालांकि ऐसा नहीं है। being highly emotionally intelligent doesn't mean being extra nice, polite, or sugarcoating your language. The females are not superior to male in expressing experiences, emotions, as most of us tend to believe incorrectly. In fact, the research shows that male are equally emotional when compared to female.
There is no direct evidence to provide that EQ is dependent upon heredity. However, the अच्छा, ये भी environment. बड़ा इंपॉर्टेंट है। आप देखें ना कि डायरेक्ट एविडेंस अभी तक नहीं आया कि ये आप हम इनहेरिट करते हैं। इसका मतलब हम इसको एक्वायर कर सकते हैं। सर मेरे ख्याल ठीक में है। तो एविडेंस तो नहीं है, लेकिन ऐसा होता है अब आपके जो बच्चे हैं उनमें से कोई ना कोई एक जैसा बिल्कुल आपकी तरह होता है। ये बात आपकी दुरुस्त है। हम ये एक जिसे कहते हैं ना हाइपोथेसाइज कर सकते हैं, लेकिन अनलेस इट इज प्रूवन, इसका मतलब सिर्फ ये स्ट्रेस देना है कि हम एक्वायर कर सकते हैं, हम ट्रेन कर सकते हैं और ट्रेन हो सकते हैं। Advocating EQ doesn't mean that we are हाँ, promoting low क्योंकि scorers इससे or एस्केप भी average हम ले IQ. लेते हैं ना, एस्केप भी ले लेते हैं। छो जी, फिर आईक्यू नु की करना है, फिर हमने स्कोर को क्या करना है, ये नहीं है मतलब इसका। ये भी एक मिथ है कि जी फिर अगर हम ईक्यू पे स्ट्रेस देते हैं तो छो जी बाकियों को छोड़ दे, ये नहीं है। Having average EQ is not bad or undesirable. हाँ। Having high EQ is always welcome. We are not negating the IQ. In fact, a combination of high EQ and high IQ would be the most ideal personality. It would be a win-win situation. Can EQ be developed? Yes, ये इंपॉर्टेंट है, ताकि अगर हम ये बिलीव करते हैं EQ डेवलप हो सकती है, क्या ना जी, मेजर किया जा सकता है। यस, देयर आर टेस्ट, साइकोलॉजिकल टेस्ट होते हैं। बिजनेस में कहाँ ये अप्लाई होगी? जी 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 सर। सर इसमें फिक्स्ड माइंडेडनेस और ग्रोथ माइंडसेट जो है, इसका कोई इसमें एलिमेंट, इसमें कोई फैक्टर इसमें पॉसिबल? डेफिनेटली है कि फिक्स माइंडसेट और ग्रोथ माइंडसेट का इसमें फर्क होगा, लेकिन ग्रोथ माइंडसेट की उमूमन EQ जो है वो ज्यादा होती है। लेकिन आप यू कैन गो फ्रॉम फिक्स माइंडसेट टू ग्रोथ माइंडसेट इफ यू रियलाइज एंड यू वर्क अपॉन इट। कस्टमर सर्विस, हायरिंग, अदरवाइज तो फिर जरूरत ही नहीं है ना उसके पढ़ने की। अगर ग्रोथ माइंडसेट को आप अचीव नहीं कर सकते या ट्रेन नहीं उसमें कर सकते, तो फिर वो आप एक फिक्स चीजें हैं, तो वो आप सिर्फ पढ़ेंगे, उसका फायदा आपको कोई नहीं होगा। कंक्लूजन, applying EQ makes you feel comfortable within your own skin and with people around you. You can also understand what makes you incompatible with certain people or jobs and learn ways to deal with the emotional difficulties. You can also understand the specific feelings that cause you stress and learn ways to become more at peace. Anyone can be angry, that is easy, but to be angry with the right person, to the right degree, at the right time, for the right purpose and the right way, that is not easy. And that relates to EQ. Any questions? So far we have addressed assertiveness and EQ, which are parts of the, not whole, but parts of important parts of interpersonal skills or interpersonal relationship. And these are equally important as IQ is important in our success or determining success as a teacher or as a medical practitioner. Any comments about what we have discussed so far? Sir, should we put some individual effort in inculcating the soft skills and personality development in students? Definitely, it is part of the training. It is part of our responsibility that we need a balanced doctor who has important knowledge and skills, and these skills also include interpersonal skills. Any questions from the participants? Sir, I have one question. Sir, how to improve your EQ? What would you suggest to improve the EQ? हाँ, उसमें आप डिफरेंट एरियाज हैं, जैसे कम्युनिकेशन आप बेहतर करें, आप अपने इमोशंस को रीड करना शुरू करें। यू रीड व्हाट आर द इमोशंस, हाउ वी हैंडल दीज। अब जैसे एंगर की मैंने बात की, कॉमन मिथ ये है
कि अगर हम आ, किसी के ऊपर बर्स्ट कर सकते हैं, अपना एंगर निकाल दें, तो फिर हम ज्यादा कंफर्टेबल हो जाएंगे। रिसर्च कहती है कि दैट्स नॉट ट्रू। वो ये कहती है कि एंगर को अगर आप नॉर्मल वर्ड्स में, विदाउट बीइंग लाउड, विदाउट बीइंग येलिंग ऑन अदर पर्सन, आप सिर्फ कन्वे करते हैं, फर्स्ट करें मैं किसी बात से हूं, तो आप नॉर्मल वे में एक आप कहते हैं कि आई एम एंग्री बिकॉज ऑफ दिस रीजन, एंड बी अ ब्रोकन रिकॉर्ड। इसको कहते हैं कि जी आप अपना ब्रोकन रिकॉर्ड, आप लोग शायद नहीं जानते होंगे, जब ग्रामोफोन होता था, रिकॉर्ड जब ब्रोकन होता था, तो एक लफ्ज पे वो अड़ जाता था, वो वहीं पे खड़ा रहता था, यस 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 यस, नो 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 नो, एक लफ्ज पे वो बार बार रिपीट करता रहता था। तो बी अ ब्रोकन रिकॉर्ड, आप ये कहें कि मैं आपसे गुस्से को वो आपके डिसिपिटेट करेगी, हीट डिसिपेट होगी आपकी बॉडी से, और आपका एंगर राइट वे में रिजॉल्व होगा। जी, ओके सर, थैंक यू। वेलकम। Sir, please, can you repeat, please, how to be a broken record? Because I think the voice was a little bit interrupted. Okay. Can you listen to me now? Yes, sir. Yes, sir. Now, yes. Okay. What I was describing is how तो आप बगैर अपनी आवाज लाउड किए, बगैर येल किए, बगैर बस्ट किए, आप उसे कहें कि लुक, आई एम एंग्री बिकॉज ऑफ दिस थिंग। और ये जब भी वो बात करे, लुक आई एम एंग्री बिकॉज ऑफ दिस थिंग, ब्रोकन रिकॉर्ड बन जाए। आई एम एंग्री बिकॉज ऑफ दिस थिंग, आई एम एंग्री बिकॉज ऑफ दिस थिंग, आई एम एंग्री बिकॉज ऑफ दिस थिंग। So in this way, you will communicate to other person that what is, why you are angry, and then other person will be able to understand. इस दौरान आपके अंदर एक हीट पैदा होगी, आप बिल्कुल सुर्ख हो जाएंगे, और उस सुर्खी जो अब वो हीट डिसिपेट होगी एनवायरनमेंट में, तो आपका एंगर जो है वो रिजॉल्व हो जाएगा, बजाय इसके कि आप उसके ऊपर येल करें या आउटबर्स्ट करें। Do you understand what I mean? Yes, sir. Sir, I understood. Sir, may I have one comment, sir? MashaAllah, it was excellent workshop, and you addressed it generally excellent on emotional, EQ, which we all need. Sir, you mentioned multiple components of EQ: competency, maturity, and sensitivity. Sir, of course, you tried to cover, but it's a short workshop. I have a request, if possible. Actually, two requests. One, if there are any recommended books or exercises like the one you mentioned about anger management, the one you mentioned about the shop, you know, how to say no and these things, very nice exercises. So, sir, is there any recommended book from where or side where we read, we can, improve our EQ? Because if we don't improve our own EQ, we won't be able to really help our students. So one thing is, if there are any recommended books or sites where we can practice these other exercises as well to address other components of EQ. So the other request is, if we can have, I'm being greedy, of course, but I know, sir, you are very generous. If we can have more like workshops to address the different components of EQ, because it's quite vast and it's the need of the day. So if the different components, emotional competency had a lot of components, and maturity, sensitivity had multiple components. So it's a request, if we can have, more on these workshops, so you will help us a lot, and we will be able, we'll be able to be your sadaqah jariyah and improve our students, inshallah, EQ, inshallah, inter. Thank you very much for your interest and for your compliments regarding the workshop. I do understand and I do acknowledge that in this short workshop, you cannot, include all the components which are required for the interpersonal skills, and we can handle these or address these in other workshops as well, and I'll try to do accordingly. And the other thing about the resources, the one book I referred to was Don't Say Yes When You Want to Say No. Might be you have got, you have this available as ebook or something. I don't know about that. I read this book long back, like about 20 years back. And I look for other resources.
which are understandable and which are short, so that in your busy time you can refer to those resources to develop more EQ and to develop more interpersonal skills to handle these situations. Thank you very much, sir. You're welcome. सर आई वुड लाइक टू ऐड एक बुक है उर्दू में सर किताबे जिंदगी नाम है उसका। तो मुझे ये लगता है कि मैं अपने अंदर कुछ चीजें जो मैंने चेंज की हैं, मैंने उस बुक को रीड करके मैंने चेंज की हैं। दैट इज रिटन बाय मौलाना वहीदुद्दीन। किताबे जिंदगी सर उसका नाम है, मौलाना वहीदुद्दीन सर। ही इज अ रिलीजियस स्कॉलर, ही लिव्स इन इंडिया। और मेरा ख्याल है कि उसमें बहुत सारी ऐसी एग्जाम्पल्स हैं, ऐसे वाकयात उसमें लिखे हुए हैं जिससे इंसान जो है वो गाइडेंस भी लेता है और चेंज भी आप अपने अंदर लेकर आ सकते हैं। That's wonderful. If we can get that book and read it, that will definitely improve our emotional intelligence. Any other questions, or we conclude? Thank you very much, all the participants, for patient listening and for rich participation in the discussion. And we look forward to other meetings when we get together, even in live workshops, without online, face to face, and also online as well. Thank you so much. And I again thank the IT department for their support in all these processes. Thank you, sir. There is a message. Thank you, sir. Thank you so much, sir. That it was a great workshop, and he says thank you to you. Thank you so much. Thank you so much.